जो आपकी required return है, for example, you're getting, for example, your required rate is say 12%, because you're going to put your money in a stock market and you're going to get 12% return. So that is your required rate. It all depends upon, person to person. Suppose you don't go take at all any risk. So you're going to put your money in a government bond, you can earn about 7.5% or 7.3% return. So that is your opportunity cost of capital. Because if you receive money today, instead of putting your money in an investment, you're putting in, you're going on holidays. Suppose you're thinking that you have got 5 lakh rupees, so let me go to I mean to Europe and spend on holidays. So what you're losing is the return which you could have got it by putting your money in an investment. So that is called the opportunity cost of capital. Okay. So, like individuals, because we also have a required rate, because if I have money today, how many people would like to put money in the stock market? I mean, or suppose there's a choice given to put your money in a stock market or put your money in a fixed deposit. So, what will be your choice? Where you like to put your money? So most of you would like to put your stock market. Of course, you like to put it in a stock market for a longer period so that you can earn a return. So that is your required rate of return. So individuals have their required rate of return because they think that putting money in a fixed deposit, it is not going to give you anything, and you are going to, lose money. Okay. So just okay, we will come to that. So similarly, companies also have their required rate of return. So all companies have their own required rate of return. All companies are not earning the same amount of return. It all depends upon what kind of business you are doing. Okay. So, if suppose if suppose Hero company where you are working, suppose it gives you around 15% kind of return to its investors, and the cost of capital of the company is say around 12%. So, so for a company, the required rate of return should be around 15% because the investors would always demand that kind of return. So if you are putting your money in a new equipment which you are going to buy, or a new product which you are going to launch, if it is going to give you a return say 20%, will you like to invest in that opportunity? Say yes or no. So if your firm, if your company is giving 15% returns to its shareholders, and if it has an opportunity to earn 20%, then it is going to earn, put that money in that investment. But if suppose the company is giving you only the investment is going to give you only 10%, will you put the money of the shareholders in that investment, into that business? Say yes or no. So basically, like individuals, firm also have required rate of return and use them in evaluating the desirability of alternative financial decisions. So basically, you have a lot of opportunities, you have a lot of places where the company can invest money, but they are going to invest only into those areas which is basically over and above its required rate of return. Now, required rate of return is what company is going to get, or rather what shareholders expect from the company. Okay, fine. So let's start with now on the more practical note. So first we are going to calculate the future values. Okay. So read this. So which you will prefer? 10,000 today or 10,000 in 5 years? What will be your preference? Today. Okay. So obviously today. So the answer is the same what you said. You already recognizing that there is a time value of money. Okay, because you know that 5,000, 10,000 to be received today is much better to receive after 5 years. Okay. So why is the time such an important element in your decision? Because this allows you the opportunity to postpone consumption and earn interest on it. Okay. So there are two kinds of interest, very simple rate of interest and compound interest. Can you read this? So basically, you in a simple rate of interest, whatever interest you are earning on the original amount, or which you have either borrowed or you are given to someone else, you have lent that money. So you are earning that simple rate of interest. Okay. Whereas in compound, you earn interest on interest. On any previous interest, if the money is lying, you will earn interest on that. So that's a very simple thing we all know. So let's do that. So the formula for calculating the simple interest formula is the simple interest is equal to the principal which you are deposited today into interest into the number of years, number of period n. So assume that you deposit 1,000 in an account earning 7%.
simple interest for 2 years, what is the accumulated interest after the end of 2 years? So it will be, 1000 rupees multiplied by 7% into 2. So you are going to get 140 rupees. This is the interest which you are going to earn on 1000. So what will be the amount after, say, 1 year? It will be this 2 years, it will be 140 rupees. So we all know simple interest is very easy. So read this future value. So you are calculating the present, the future value based on the interest we had seen. Okay. So look at this table. Okay. So this is, 1 year, 10 year. If you see on a horizontal axis, x-axis, after first year, after 10 year, after 20 year, after 30 year. So if the money is put at 10% simple interest, and the last one is 10% compound, and middle one is 7% compound, you can see, after 30 years, the simple interest is this much, at 7% is this much, and 10% has grown like anything. Okay, so this is a very important phenomena, and we'll understand there is something called magic of compounding, and we will understand that in a short while from now. Okay, so assume now first thing we are going to calculate is compounding, future value of a lump sum. Suppose you deposit 1000 at the compound interest rate of 7% for 2 years. So after 2 years, how much it is going to become? So after 1 year, the formula is, the future value for the first year is equal to the principal at the beginning of the year into 1 plus I, which is the interest rate, raised to power 1. So you do 1000 into 1.07, you will get 1070 after 1 year. Okay. So you earned 70 rupees interest on your 1000 deposited over the first year. This is the same amount of interest you earn under the simple interest also. So up to 1 year, it's the same. But as you go in the second year, so if you look at the formula, up to first year it was 1070. So future value in the year 2 will be the future value of number 1, which we have just calculated, into another 1 plus I raised to power 1. So which is basically, replacing this formula into this. So we'll get future value 2 will be the principal into the 2-year interest. So which will be 1000 into 1.07 and 1.07. So if you raise to the power 2, you will get 1144.90. So here you are earning interest on interest. So you earn an extra interest of 4.90 rupee in the year 2 with a compound over a simple interest. Okay. So this is, one way to calculate. You can even use an formula. Okay. So I'm just going to take you the link. So there is a table here. Okay. So what was the rate of interest? 7%. After how many years? 2 years. So this table tells you that if you put your money for number of years on your left hand side and rate of interest. Okay. So these are the old ways of calculating. You used to always, look at the table before the computers or before the calculators even came. So you can look at the, the formula. It is 1.149. So that means 1 rupee. So this is all 1 rupee. If 1 rupee you put for 7% after 2 years is going to become 1.149. Okay. Or you put, 1 rupee for say 25 years at say 10%, the money will become 10 rupees 83 paisa. Okay. So is this table clear to all of you? So if you come back here, so sorry. Okay. So you are earning 7% rate of interest, and in the 4th year at 20% you are doubling. Absolutely fine. So this is basically a table, future value for single cash flows. Okay. So there are 4 tables which I'll be introducing with you. So just for your understanding, but of course you will be all doing on your Excel sheets. So just to have some idea that you said after 4 years 1 rupee will go to 2 rupees 7 paisa. Now tell me, if you have invested 1 rupee for say at 13% rate of interest for 10 years, how much the money will go up? Any answer here? 13 साल के बाद, sorry,
हाँ 10 साल के बाद 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका कितना बन जाएगा? 1 रुपया। हाँ 3.39 absolutely. So this table is telling you, how this is for a single cash flow. It gives you a ready reckoner. So I'll just take you to my Excel sheet back. Okay, sorry. हाँ compounded. Yeah, everywhere you're getting compounded. Okay, fine. So this is, you can go to the table and do it. Now, next thing is that you can go also, using in Excel. Okay, so where we are going to use the future value. So go to the Excel, open the Excel. So Excel में आप क्या करेंगे? इसको मैं बंद कर देता हूं. So go to, financials, go to the formulas and pick up future value, FV. Okay, fine. Rate of interest was how much? 7%. Okay, number of years, 2. And what is the amount which you gave? It has to be put in minus sign. Okay, and just press enter. So that means, you can see this basically, it becomes 1144. I'll just make it a little bigger so that you can. So your 1000 has grown and become 1144.90 after 2 years. Okay, so let me just use another this thing. Now go to the recently used. So your future value will be there. Now, if suppose the rate of interest is 12%, okay, and you're putting your money for 7 years, and the money you have invested is say 10,000 rupees. So how much this money will become? So you can calculate. It will become 22,000. So this formula can be used, for doing any calculations. Okay. So I give you one question. Okay. Suppose. So what you have to do is basically, have you opened the Excel sheet? So go to formulas first, go to financials, and go to FV, future value. Okay. So you'll find somewhere FV. Okay, here. Fine. So you will have this table on your screen. Okay. So this is the rate. Okay. So suppose I say you get 15% return in a stock market, on a particular stock, and you have invested for say 20 years. Okay. And go to PV. Other columns should be left. You can either put 0 everywhere. Okay. Fine. If you don't want to put, by default, it will take 0. So what is your present value? How much you're going to put your money today? You're going to put, say, 50,000 rupees. NPER is the years. For how many years you are going to put your money. Okay. So NPER, talks about the number of years, and rate of interest is the rate of interest at which you are going to get. And PMT, you can leave it blank or make it 0. I'll tell you what is the PMT, okay, later on. Type also 0 and put your amount which you're going to invest. Okay, so that means in this question I'm saying that you are investing 50,000 rupees. Okay, put a minus sign in front of PV. That means this is the money which you're going to invest today. So the money is going to go out of your pocket. Okay, for how many years? 20 years. At what rate of interest? 15%. And press OK. So this is going to become how much? 8,18,326. So if you have invested, 50,000 rupees at 15% for 20 years, so that will become 8,18,326 rupees 87 paisa. Okay, I'll just repeat. So you go to now you go to recently used, because you will find the FV already coming there. Have you got it here? Suppose you are going to get 15% return. अब आपके पास ये आ गया. हाँ. So rate is what is the rate of interest? 20%. Okay. And how many years? 5 years. 4 years. 4 years.
and you are going to put visible. So ये देखो आप, ये आपका आ गया आंसर 2 रुपए 7 पैसे, विच इज शोन इन द टेबल इटसेल्फ. ओके, टेबल में भी 2 रुपए 7 पैसे आया था. तो आई जस्ट, हाँ अब मैं दोबारा बताता हूँ. देखो ऐसा है, आई एम पुटिंग माई कर्सर हेयर, गो टू फाइनेंशियल्स, पिकअप एफवी. ओके, look at the rate of interest. Suppose I say you get 15% rate of interest, say for 20 years. अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हैं जिसमें कि आपको 15% रेट ऑफ रिटर्न मिल रही है और आपके साल हैं 20 और आप अमाउंट लगा रहे हो 50,000, आपने 50,000 रुपए लगाया, यहां पर पीवी कॉलम में आप माइनस डाल दो और बाकी कॉलम आप ब्लैंक छोड़ दो या जीरो डाल दो. Okay, so whatever, even if you leave it blank, it will not. So you are putting your money at 15% rate of interest for 20 years, and how much? 50,000. So you want to know how much is going to earn. So this money is going to become how much? 8,18,326. ठीक है? कोई आपने गलती करी होगी. मैं एक सेकंड में स्क्रीन पहले डाल दो, पहले स्क्रीन. हाँ, परसेंटेज डालना पड़ेगा. वो कोई ना कोई आपने गलती करी होगी, तो अभी मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, आप उसके हिसाब से चलो आप. हाँ, वो तो आप उसमें जाके ना बाद में चेंज कर. हाँ हाँ, तो वो जो अभी डॉलर आ रहा है वो आप जाके पीछे अपने उसमें जाके चेंज कर सकते हो. ओके, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने रुपी में सेट करा हुआ इसलिए आ रहा है. सो अगेन आई विल शो यू वन मोर दिस थिंग, वन मोर टाइम. ओके, फ्यूचर वैल्यू. So I am taking rate. Say I am getting 12% rate of return, and period are 5 years. I am putting 1 lakh rupees. Suppose मैंने 1 लाख रुपए लगाया कहीं पर. ओके, एंड आपको यहाँ माइनस साइन देना है, यहाँ 12% लगाना है, यहाँ सिंपली 5 लगाना है बस. तो आपने 5 साल के लिए 1 लाख रुपए लगाया 12% पे. सो हाउ मच दिस अमाउंट गोइंग टू बिकम? 1,76,234. इज दैट क्लियर? वो आपको ऐसा करना पड़ेगा, यहां पर जाके आपको फॉर्मेट सेल्स करने पड़ेंगे ये. ठीक है, और यहां पर जाके आपको करेंसी में जाना पड़ेगा. ओके, आ रहा है आपका करेंसी? यहां. ओके, और यहां पर आप रुपी का सिंबल ले आओ. ओके, और ओके कर दो. फिर आप नीचे ओके लिखा हुआ है, इसको ओके कर दोगे तो वो आ जाएगा. इज दैट ओके? Okay, so let me just open my slide. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, अमाउंट को लेके उसको रेस करो 7% और 2 साल, ऐसे भी कर दो. ओके, अब ये देखते हैं. अब ये आप कैलकुलेट करो अपने आप, बताओ. Geeta wants to know how large the deposit of 10,000 today will become at a compound annual rate of 10% for 5 years. Use your Excel sheet and tell me the answer. हाँ, 16,105. You can see on the screen. All of you have got it? सबका आ गया? एब्सोल्युटली. तो ये तो हो गया एक्सेल से. ओके, अगर आपने करना है मैनुअली तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10,000, ये वाला यही था ना आंसर? हाँ ठीक है. तो ये 10,000 इंटू 1.10 रेज टू पावर 5. तो आप इसको कैलकुलेटर करके यूज कर सकते हैं. तो लेट मी जस्ट टेक अ कैलकुलेटर है. अगर आपने कैलकुलेटर से करना है तो कई बार तो आप कैलकुलेटर से भी करते हैं ना, तो इट इज 1.10. ओके, कीप मल्टीप्लाइंग 5 टाइम्स. ये तो एक दफा हो गया, ये 2 दफा हो गया, इनटू ये 3 दफा हो गया, 4 दफा हो गया, इनटू 1.10. ओके, तो ये आ गया 1.61. तो 1 रुपया बन जाता है 1 रुपया 61 पैसे
और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 10,000 से, ओके, इनटू 10,000। हाँ मैं दोबारा बताऊं, देखो ये बन गया आपका आंसर। हाँ अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर तो आप कर सकते हो अपने आप, तो मैं दोबारा दिखाता हूं आपको कैलकुलेटर में। तो आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1.1 रुपया बनता है आपका, 1 रुपया 10 पैसे, तो 1.10। ये तो आपका 1 रुपया 10 पैसे बन जाएगा 1 साल के बाद। 2 साल के बाद क्या होगा, फिर आप 1.10 को एक बार फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे करते रहो 5 दफा। तो 1 पॉइंट आपने 5 दफा करना है इसको, तो ये फिगर आ जाएगी अभी की 1.16105। इसको मल्टीप्लाई करा है हमने 10,000 से। ये ठीक है, आप समझ आ गया। हाँ एक्सेल वाला अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। आपके पास 10,000 रुपए हैं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 साल के लिए, तो लेट्स गो टू, ओके, फिर आप एक्सेल में जाते हो, ओके, तो यहां पर आप फॉर्मूला में जाओगे और रिसेंटली यूज फॉर्मूला एफ वी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, है 10%, और कितने साल है, 5 साल है, 5 ईयर, और प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 10,000, ओके। सो ये हो गया 16,105। आ गया। तो उसमें तो सिंपल है, उसमें तो क्या करो आप कि आपका 10,000 है, ओके, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 10%, ओके, और कितने साल है, 5। तो आपने सिर्फ इसको यूं और मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो ये 5,000 रुपये इंटरेस्ट आ गया, और इसमें आपने सिर्फ प्रिंसिपल ऐड कर दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट में कितना बनेगा, 15,000, और कंपाउंड में कितना हो जाएगा, 10,105। So this is the principal into interest into number of years. So interest comes to 5,000. So principal plus interest comes to 15,000. Is this clear? हाँ इसमें क्या, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, हाँ, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता जाता है आपको, इसलिए कंपाउंड से ज्यादा ग्रो करता है चीज। हाँ 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 हाँ, उसमें देखो इसमें क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। सपोज आपके 10,000 रुपए पड़े हुए हैं बैंक में, ओके, और आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, सॉरी 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, ओके, पर एनम, बट आपको क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, ओके, ये कहना चाहते हो ना आप। तो इसको आप क्या करोगे, हाँ, तो इसको 4 से डिवाइड, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इतना आएगा। हाँ अभी अभी करेंगे, अभी अभी आ रहे हैं हम, धीरे धीरे सब पे आ रहे हैं, अभी रेकरिंग पे भी आ रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, एवरीथिंग विल बी कवरिंग, ओके। सो यू हैव टू बी जस्ट लिटिल बिट पेशेंट, वी विल बी डूइंग एवरीथिंग, ओके। बंद क्यों हो जाता है, अच्छा, हाँ, तो ये आ गया था आपका, ओके। अगर आप टेबल देखना चाहते हो तो आप टेबल पे जाओ, ओके, तो ये देखो आप 10% पे 5 साल में इट इज बिकमिंग 1.61, जो आपने करा था ना, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.5, 5 टाइम्स, सो दिस इज बिकमिंग 1 रुपी इज बिकमिंग 1 रुपी 61 पैसा, ओके। तो हम वापस जाएंगे, सॉरी,
तो ये आपका 1.61 टेबल से भी आप कर सकते हैं आप। ओके, तो कैलकुलेटर से, टेबल से, एक्सेल से, तीनों से कर दिया आपने। इज दैट ओके? ओके, आगे चलते हैं हम। तो हम पहले समझते हैं कि फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या है। जनरल फॉर्मूला ये है। हाँ जी, ब्रश तो सुबह ही कर लिया। हाँ, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। उसको ब्रश कराने तो किसी को, बच्चे को कराना होगा ना। ओके, सो so future value is equal to P, which is the principal amount, into 1 plus the rate of interest into N. ओके, ये फॉर्मूला है। अगर आपने मैनुअली कंप्यूटर कैलकुलेटर से करना है तो आपको वो अमाउंट लेना पड़ेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको एन, मतलब जितने पीरियड से आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 साल है, 10 साल है, वो यहाँ लगा सकते हो। ओके, एक्सेल शीट में ये फॉर्मूला था। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू रेट, एनपीआर, पीएमटी, पीवी एंड टाइप। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डालो, एनपीआर को नंबर ऑफ पीरियड डालो, पीएमटी को जीरो रखो, टाइप को जीरो रखो। अगर जीरो भी नहीं रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। और then you will get present value as minus. So this is the Excel sheet formula for calculating the future value of a lump sum. Is that okay? हाँ, माइनस, हाँ, दैट्स अ वेरी गुड। बिकॉज माइनस इसलिए कि आज आप पैसा जमा करा रहे हो, आपकी जेब से जा रहा है, आपको मिल रहा है 5 साल के बाद। तो आपको एक्सेल को बताना पड़ेगा, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, दिस इज गोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट। अभी आपका पैसा जेब से निकल रहा है, तो इट्स अ माइनस साइन। जब मिलेगा 5 साल के बाद, इट विल ग्रो एट अ कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इज दैट ओके? ओके, अब इसको करो आप। हाँ, इसको शायद नहीं कर पाओगे। सपोज यू हैड अ डिपॉजिट ऑफ, उसमें एक्सेल में तो कर लेंगे हम। सपोज यू हैड अ डिपॉजिट ऑफ ₹10 एट 5.5% इंटरेस्ट 2 years ago। आप 200 years ago, आपने 200 साल पहले आपके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर ने ₹10 डिपॉजिट करे थे बैंक में, उसमें 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था। So how much the investment will be worth today? इसको कैलकुलेट करो आप एक्सेल शीट में। 10 रुपए करके आंसर बताओ मुझे। हाँ, तो 4,40,000 से, ये आपने एक्सेल से करा था। वेरी गुड। सबका सब करके देखो, सबका आ रहा है 4,47,189। ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट। सो फॉर्मूला क्या है? ₹10 इंटू 1 ये 5.5% को हमने लिखा 0.055 रेस टू पावर 200। ओके, सो यू विल गेट दिस। ओके, यू कैन यूज योर एक्सेल शीट एंड कैलकुलेट। ओके, तो अगर, हाँ, तो ये देखो आप 5.5%, 200 साल माइनस ₹10, इट बिकम्स 4,47,189। इज दैट ओके? सो so what is that? If, so that means, you have put it for 200 years, it becomes this thing. Okay. So what is the effect of compounding? Suppose यही पैसा आपने सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट में लगाया था, तो क्या होगा? ₹10 प्लस 200 इंटू 10%, सॉरी 200 साल, ₹10, 5.5%, so it will become only ₹120। तो आपके सिर्फ ये पैसे बने ₹120। So compounding, has added 4,47,069 rupees। तो आपका पैसे पहले आ रहा था 4,47,100 एंड समथिंग, तो ये होगा कंपाउंडेड में इतना पैसा अर्न हो गया आपका। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ कंपाउंडिंग। ये यही पैसा जब आपने कंपाउंड में लगाया 200 साल के लिए, तो वो पैसा बन गया 4,47,189। और वही अगर आपने सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट में लगाया होता, आपके ग्रैंडफादर हैज पुट दैट मनी at simple rate of interest, it would have become only 120। So this is called magic of compounding. The money grows at a very great pace if it is put on a compounding। It is clear? Okay, अब ये निकालो, ये पढ़ो। अब can anybody read this?
तो ये आप एक्सेल शीट में निकालो। सो 2001 2,25,000, हाँ 2,25,000 आएगा जो आपका आंसर आ रहा है। थोड़ा बहुत चेंज बिकॉज दिस इज कैलकुलेटेड, और हम इसको इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 15% के लिए 10 साल, तो 1 रुपी विल बिकम 4 रुपी 4 पैसा। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, 4.40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2,25,000 आ जाएगा, और एक्सेल से करेंगे तो भी 2,25,000 ही आएगा। ओके, इज दैट ओके? तो आप इससे आप अपने इससे आप जा सकते हो, तो देख सकते हो कि 10 साल के अंदर 15% में टेबल के हिसाब से 1 रुपया 4 रुपए 4 पैसे बन गया। तो अब आपको, क्योंकि 1 रुपया 4 पैसे 4 बना था, तो 55,650 कितने बनेंगे, इंटू 4 रुपए 4 पैसे। तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये सीपीवीएफ जो है, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल है, जो हमने देखा था, इसको इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है इस टेबल की। इज दैट ओके? तो थोड़ा सा ब्रेक चाहोगे?